Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello friends, how are you all? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School. Friends, today we are going to learn a grammar topic which is adjective, degree of comparison. Look at this picture. What can you see? Yes, here there are the three pictures given. In short, one picture is given. They are the three boys, Ajay, Vijay and Rajesh. Yes. So what we notice? Yes friends, we notice that Ajay is tall, Vijay is taller than Ajay, Rajesh is the tallest of the three. So friends, यहाँ पे पिक्चर दी गई, वहाँ पे हमने देखा कि अजय जो है वो टॉल है. देन सेकेंड सेंटेंस यू कैन से दैट विजय जो है वो टॉलर देन अजय, यानी कि अजय से जो विजय है वो बड़ा है. एंड देन थर्ड सेंटेंस यू कैन सी दैट राजेश इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, यानी कि जो राजेश है वो इन तीनों में से सबसे बड़ा है. सो फ्रेंड्स, वी कैन से दैट हियर द वर्ड tall, taller and tallest are adjective. So they are the different form of the adjective tall. So friends, here we use tall when we don't compare Ajay with anyone. So example, Ajay is tall. So हमने यहाँ पे अजय को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया, सिर्फ ऐसा बोला है कि अजय इज टॉल, यानी कि अजय जो है वो टॉल है. नेक्स्ट सेकेंड देखते, वी यूज टॉलर व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन. एग्जाम्पल अजय एंड विजय. जैसे हमने क्या कहा, विजय इज टॉलर देन अजय. यहाँ पे हमने कहा कि विजय जो है वो अजय से बड़ा है, इसीलिए हमने क्या यूज किया, टॉलर. नेक्स्ट सेंटेंस, वी यूज टॉलेस्ट व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन. जैसे कि एग्जाम्पल, राजेश इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, यानी कि इन तीनों में से राजेश जो है वो सबसे बड़ा है. सो दस वी सी दैट एडजेक्टिव्स कैन शो कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. So there are three degrees of comparison. First, positive degree. Second, comparative degree. And third, superlative degree. So friends, first of all, let us see positive degree. The positive degree of an adjective is used when no comparison is made. पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कब किया जाता है, जब किसी के साथ हम किसी थिंग्स या पीपल या एनिमल को कंपेयर नहीं कर रहे किसी दूसरे के साथ, तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं. लेट अस सी द एग्जांपल्स. वीना इज यंग. हमने यहाँ पे क्या स्टेट किया, जस्ट वीना इज यंग. वीना जो है वो यंग है, हमें उसे किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे. नेक्स्ट, द ग्रीन बॉक्स इज लार्ज. तो यहाँ पे एज यू कैन सी द ग्रीन बॉक्स इज लार्ज. जो ग्रीन बॉक्स है वो लार्ज है, वो बड़ा है, इसको भी हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे. तो दैट इज वाई we can notice that here we are not comparing वीना with any other person. वीना को किसी दूसरे पर्सन के साथ हम कंपेयर नहीं कर रहे. और द बॉक्स with any other box, और जो ये बॉक्स है उसको किसी दूसरे बॉक्स के साथ कंपेयर नहीं कर रहे. दिस डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग्स ओनली. सो नेक्स्ट, let us see comparative degree. The comparative degree of an adjective is used when we compare two person or things. Let us see the examples. Juhi is younger than Reena. Here you can see we compare two person. Just Juhi is younger than Reena. Reena से Juhi जो है वो young है. That is why you use comparative degree. Next, the red box is larger than the green box. Here also you can see जो रेड बॉक्स है वो किससे बड़ा है, लार्जर देन ग्रीन बॉक्स. ग्रीन बॉक्स से रेड बॉक्स बड़ा है. दैट इज वाई वी कैन ऑल्सो राइट लार्जर. कंपेरेटिव डिग्री. सो दिस डिग्री इज यूज विथ टू पर्सन और टू ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स. नेक्स्ट, लेट अस सी यस सुपरलेटिव डिग्रीज. So the superlative degree is used when we compare more than two person or things. Remember friends, more than two person or things. Let us see the examples.
नीता इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल हर सिस्टर. नीता जो है वो उनकी जो भी सिस्टर होगी उन सब में से यंगेस्ट यानी कि सबसे बड़ी है. नेक्स्ट, द ब्लैक बॉक्स इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द बॉक्सेस इन माई हाउस. हियर फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट मेरे घर में जितने भी बॉक्स है उसमें सबसे बड़ा कौन सा? ब्लैक बॉक्स है. तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? सुपरलेटिव डिग्री, लार्जेस्ट, वो सबसे बड़ा है. सो दिस डिग्री इज यूज विथ मोर देन 2 persons or things or more than 2 group of person or things. Next, let us see formation of the comparative and superlative degrees. In case of most adjectives, we add er and est to the positive degree to form the comparative and superlative degrees respectively. Let us see the examples. Positive, comparative and superlative. First adjective, near. So here we add er, nearer. Superlative degree, here we add est, so nearest. Next, young. Here we add, to make a comparative degree, we add right, er, and here we add est to make a superlative, youngest. So here, young, younger, youngest. Next rule, in case of adjectives ending in e, we add r and st to form comparatives and superlatives. Let us see examples. Positive, comparative, superlative. Fine, finer. Here we add r. Next, superlative. Here we add st because here the adjective only end with e. So that is why we add r and st respectively. Next, noble, nobler and noblest. Next rules, in case of adjectives ending in consonant plus y, we change y into ier and iest to form the comparatives and superlative degrees. Let us see examples. Positive, comparative, superlative. Heavy, H-E-A-V-I. Sorry, H-E-A-V-Y. Comparative, to make a comparative, what we have to do? Yes, consonant plus y. Before y, here you can see the consonant v. So that is why we change y into I-E-R, heavier. To make a superlative, yes, we have to change y into I-E-est, heaviest. Next, pretty, prettier, I-E-R and then superlative, prettiest. Next, for small words with single consonant at the end, we double the consonant and er and est to form the comparative and superlative. Let us see examples. Big, bigger, biggest. Here you can see we double the consonant plus er to make comparative and est to make superlative. Sad, sadder and saddest. Next, for some adjectives, we use more and most along with the adjectives to form comparative and superlatives. Positive, comparative, superlative. Intelligent, so we write more intelligent to make comparative and most intelligent to make superlatives degree. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Tired, more tired, most tired. Boring, more boring, most boring. Next, some adjectives do not follow these rules. So let us see examples. Good, better, best. Bad, worse, worst. Little, less, less. Late, later, latest. Old, older, oldest. Many, much, more and most. So friends, let us see next. Yes, here you can see exercise number 1. Fill in the blanks according to the example given below, which is given in your textbook. So let us see. Tiny, tinier and tiniest. So this one is example. Here you can see to make a comparative degree and superlative degree, we add IER and IST. The Y change into IER and IST. Let us see another. Big,
bigger and biggest. Sleepy, sleepier, sleepiest. Late, later, latest. Round, rounder, roundest. Small, smaller, smallest. Good, better, best. Lovely, lovelier, loveliest. So, friends, let's quickly revise what we have learned today. Adjectives have 3 degrees of comparison: positive degree, superlative degree, and comparatively. But we have to say like positive degree, comparative degree, and superlative degree. Next, positive degree is used when no comparison is done. Example, Mita is tall. Comparative degree is used when comparison between two things or person is done. Example, Mita is taller than Nita. Superlative degree is used when comparing more than two persons or things. Example, Mita is the tallest girl in the class. Next, we can form comparative and superlative degrees of adjective in the following ways: by adding er and est to the adjective in positive degree. Example, tall, taller, tallest. Changing y into ier and iest in the case the adjective ends in consonant plus y. Example, heavy, heavier, heaviest. Doubling the last consonant and adding er and est when small words ending with a single consonant. Big, bigger, biggest. Next, by adding more and most. Example, boring, more boring, most boring. Some adjectives do not follow these rules and form comparative and superlative by changing into completely new words like good, better, best. So friends, thank you so much. Hope you have understood this lesson.